Hello everyone, myself Bhuvnesh Kumawat, and we are continuing our modern algebra lecture series. Today we are going to cover order of group and order of element. In previous lecture we have covered quasi-group, semi-group, monoid and group, and we have taken few examples also. So first we will define order of a group. So let G be a group with finite element n, then this n we will call it order of a group. ओके अगर किसी ग्रुप में n फाइनाइट एलिमेंट है तो ये जो n है वो उस ग्रुप का ऑर्डर होता है फॉर एग्जांपल इफ g इज इक्वल टू 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर वेयर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी so here there are three elements in this group so order of group g is equal to 3 and we denote this order of group by og. Now second is order of the element. Suppose A belongs to some group G, then order of that element A is equal to n if A raised to power n is E, where this n is least positive integer. Okay, this is least positive integer. So किसी भी ग्रुप में किसी भी एक एलिमेंट का हम अगर हमें ऑर्डर देखना होता है तो हम उस एलिमेंट की उस लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पावर को देखेंगे जिसको ऑपरेट करने के बाद उसकी वैल्यू आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाती है सो दिस इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाइड वेयर दिस n इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर एग्जांपल इफ यू टेक same group G with 1 omega and omega square, where 1 omega and omega square are cube root of unity. So here we know this is group G with binary operation multiplication, and here identity element E is 1. Okay, so if we operate 1 raised to power 1 is equal to 1, that is equal to identity element E, then we can say order of this element A, or we can say order of this element 1, we can put 1 here. So order of 1 is equal to 1. Similarly, we can take omega raised to power 3, that is equal to 1, that is equal to identity element. That means order of omega is equal to 3. इसी तरह से हम ओमेगा स्क्वायर का देखेंगे ओमेगा स्क्वायर रेस्ट पावर 3 is equal to 1, that is equal to identity element. That means order of omega square is equal to 3. So this way we can find order of element in a group G. Now we will take few theorems on these two topics. First is the order of every element of finite group is a finite, and that is less than equal to the order of a group. So first we will prove first part. First part is if we take A belongs to G, okay, where G is a group, then we can say then we can say A square, A cube, so on should also belong to G by closure property. मतलब अगर A G को belong करता है तो A dot A should also belong to G by closure property. That implies A square should belong to G. Similarly, we can take these two elements A and A square belongs to G. That means A cube belongs to G. So by this induction, we can say A square, A cube, so on. All these elements will belong to same group G. Now we have to prove that the order of A is finite. So if these elements are finite, because G is a finite group,
तो ये सब फाइनाइट तभी हो सकते हैं कि एक सर्टेन इंटरवल के बाद में इसके एलिमेंट रिपीट होना स्टार्ट कर दे, नहीं तो ये इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे। सो इसको फाइनाइट होने के लिए इसके कुछ सर्टेन इंटरवल के बाद में इसके एलिमेंट रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सपोज a raised to power r, suppose we take two element a raised to power r and a raised to power s are equal. Okay, a raised to power r and a raised to power s are equal. So that means a raised to power r minus s is equal to identity element, or we can say r minus s is equal to m. Take r minus s equal to m, then we can say a raised to power n is equal to identity element. So we can take least positive value. Suppose we take least positive least positive value of m is n, then a raised to power n is e. Then we can say order of a is equal to n. Okay, so अगर हम इस ग्रुप जी को फाइनाइट मानते हैं तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए इज ऑल्सो फाइनाइट। तो हेंस टू फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया। नाउ वी विल टेक सेकंड पार्ट। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए is less than or equal to order of a group. Okay, for that, suppose order of a, we have to prove that order of a is less than equal to order of that group G, that we have to prove. So suppose if we take order of a is greater than order of G, अगर हम किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर उसके ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा कर लेते हैं, सपोज हम ये अज्यूम करते हैं, तो वी कैन से and here order of here the given group is finite, so this order of group G is finite. Okay, so suppose we take order of A is n, so then by closure property we can say a square, a cube, so on, a raised to power n should belong to G. ठीक है, ये सब डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तभी ये ऑर्डर, इसका ग्रुप का ऑर्डर n हो सकता है। सो नाउ if we take two element a raised to power r is equal to a raised to power s, okay, such that r and s should belong to one, should be between 1 and n, because यहाँ पे जो a की पावर है वो 1 2 3 4 सो ऑन अप टू n हो सकती है। तो जो r और s की वैल्यू है वो 1 से n के बीच में हो सकती है। तो इससे हम ये लिख सकते हैं कि r माइनस s should be greater than 0 and less than n. We can say, and from this equation we can write, from this equation we can write a raised to power r minus s is equal to identity element, or we can say a raised to power, suppose we take r minus s equal to m, is identity element. Okay, from this we can say, uh, हमने जो इनिशियली सपोज किया था ऑर्डर ऑफ ए इज एन, कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर एन है, और यहाँ पे एम आ रहा है, अगर एम इससे एन से छोटा लेते हैं, अगर हम छोटा लेते हैं तो वो उसका ऑर्डर हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ। इसका मतलब हमारा जंक्शन जो स्टार्टिंग में लिया वो रॉन्ग है। सो दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, हेंस टू नाउ next theorem, order of, if we take group G, if A belongs to some group G, then order of A is equal to order of A inverse, that we have to prove. We can take order of A is equal to n, that means A raised to power n is the
E, and order of A inverse is equal to n. That means A raised to power A inverse raised to power n is E. Take this first equation, that is, take this second equation. Okay? From here, we can write, from this equation we can write, we can take inverse in both sides. A raised to power n whole inverse, that is E inverse, and E inverse is equal to E identity element का inverse identity element होता है. So from this we can write A inverse raised to power n, that is equal to identity element. Okay. From this we can say initially we take this equation 3. Now from equation 2 and equation 3 we can say this m divides n, or secondly we can say this m is minimum number, because here m is the order of A inverse, so ये सबसे छोटा least positive integer number है. So this m is less than equal to n. Okay, या तो हम ये लिख सकते हैं कि m divides n, इसको हम लेटर अगली थ्योरम में हम इसको प्रूव करने वाले हैं. तो या तो हम इसको कह सकते हैं m divides n, और we can say m less than equal to n. Okay, call it equation 5. Okay, call it equation 5. Now from this second equation we can take inverse in both sides. So A raised to power minus m whole inverse is equal to E inverse, that is equal to E. Similarly we can say, क्योंकि identity element का inverse identity element होता है, so from this equation we can write A raised to power m is equal to E. Call it equation 4. Now from equation 1 and 4 we can write n divides m, or n is less than equal to m. कैसे? Because here order of A is n, मतलब ये जो n है यहाँ पे, जो n है वो लीस्ट पॉजिटिव नंबर है, मतलब ये सबसे छोटा नंबर है. इससे बड़े हो सकते हैं, इसके ऊपर मतलब इसकी एक्स्ट्रा पावर लेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट दे सकता है, लेकिन इससे छोटा कोई भी नहीं मिल सकता. तो E इज अ लीस्ट पॉजिटिव नंबर, n इज अ लीस्ट पॉजिटिव नंबर. तो जो अगर m के साथ भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो m इससे बड़ा होगा, ये इसके इक्वल होगा. तो कॉल इट इक्वेशन 6. Okay, so from equation 5 and 6 we can say n is equal to m. Okay, so order of element A is equal to order of A inverse. So from this we can say order of A is equal to order of A inverse. Hence proof. Now next theorem. Here the order of any positive integral power of an element A in a group G cannot exceed the order of A. That means order of A raised to power n is less than equal to order of A. Okay. So similarly, we take order of A is equal to n. That means order of or we can say A raised to power n is equal to E, where n is the least positive integer number. So now we can take A raised to power n raised to power n is equal to identity element raised to power m, that is equal to E. From this we can write A raised to power n raised to power n is equal to identity element. So जो एलिमेंट है A raised to power n, उसकी पावर n लेने से हमें आइडेंटिटी एलिमेंट आ सकता है. पर यहाँ पे जो कंडीशन है वो यहाँ पे जरूरी नहीं कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर है ये n.
it is not implied that this n is least positive integer for element a raised to power n that makes it identity element. Okay, so we can say a raised to power n, order of a raised to power n is less than equal to order of a. ओके, अगर ये एन यहाँ पे भी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो जाता है, इससे छोटा हमें कोई भी नंबर नहीं मिलता है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. ओके, फॉर एग्जांपल अगर सपोज वी कैन टेक ए रेस्ट पावर 3 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ए रेस्ट पावर 6 भी आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगा ऑब्वियसली. सो ये तीन यहाँ पे लीस्ट पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ 6 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जरूरी नहीं लीस्ट पॉजिटिव नंबर हो. ठीक है, तो हेंस टू नाउ नेक्स्ट थ्योरम. If A is an element of a group G such that order of A is n, then A raised to power n is E if only if n divides n. Okay. So given that order of A is equal to n. Okay. That means A raised to power n is the identity element. Okay. Now there is a given condition is if only if, मतलब हमें ये लेके ये प्रूव करना है एक बार में और इसको लेके इसको प्रूव करना है. तो पहले हम नेसेसरी कंडीशन लेंगे, फिर सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करेंगे. तो नेसेसरी कंडीशन प्रूव करने के लिए सपोज गिवन दैट a raised to power m is e. Okay, now we have to prove that n divides m. Okay, for that if we take by the division algorithm we can take here n divides m. That means n is equal to q n plus r. By division algorithm we can take this. Now put this in equation, this equation 1. So a raised to power q n plus r is equal to identity element. That means a raised to power n raised to power q dot a raised to power r, that is identity element. For here r is less than equal to 0, greater than equal to 0 but less than n. ठीक है, क्योंकि ये डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब ये है कि ये आर अब रिमाइंडर है. अगर हम एन को एन से डिवाइड करते हैं तो कुछ हमें इंटीजर मिलेगा और कुछ रिमाइंडर मिलेगा जो उससे डिवाइड नहीं हो रहा है. ओके, सो जो आर है वो जीरो से या जीरो के इक्वल होगा या जीरो से एन के बीच में होगा. सो नाउ टेक दिस इक्वेशन 2. नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन 2 that implies e raised to power that a raised to power n is equal to e from this equation, and e raised to power q dot a raised to power r is equal to identity element. That means a raised to power r is identity element. But initially we assume that this n is least positive number such that a raised to power n is equal to identity element, where r is less than n. So इस n से छोटा r हो नहीं सकता. So here value of r should be equal to only 0. That means this r is 0. So from this equation, suppose this is equation 2, from equation 2 we can say n plus q n is equal to qn plus r, that r is 0. So from this we can say q is equal to m n, or we can say n divides n. तो एक पार्ट प्रूव हो गया. अब नाउ we will take sufficient condition. So from here, suppose given that order of a is n, then a raised to power n is identity element. So from here, and given that n divides n, given that
n divides n. That means we can take n is equal to n cube. Okay. Now take a raised to power n, a raised to power n, that is a raised to power n cube, that is equal to a raised to power n whole power cube. And we know a raised to power n is identity element. So e raised to power cube, that is equal to identity element. So a raised to power n is identity element. So hence true. We have proved both part. Now next theorem. If A is the element of group G such that order of A is n, then set this set H, that is A square, A cube, A raised to power n, form a group with respect to same composition of G. तो G की जो कंपोजिशन है उसी कंपोजिशन में ये H भी ग्रुप होगा, ये हमें प्रूव करना है. तो गिवन दैट A raised to power n is E because order of A is n. So that is how given. So we have to check four basic properties of group, that is closure, then second is associativity, third is identity element, fourth is inverse. So a raised to power n, where n is least positive integer, that is equal to E. That means that a raised to power n is identity element. Okay, so a raised to power n is identity element in this set H. So first property is satisfied. Now we will check closure property. Closure, for closure, if we take two elements, a raised to power r and a raised to power s, then we operate, then a raised to power r dot a raised to power s, that is equal to a raised to power r plus s. This this should belong to G. Uh, Here we are taking set H, so belong that belongs to H. Okay, so that belong to H. तो अच्छा यहाँ पे ये हो सकता है कि R plus H n से बड़ा हो जाए. Okay, if this R plus S is greater than n, okay, then by division, or we can say R plus H is n, or and m is greater than n, then by division algorithm we can take m is equal to n cube plus r. Okay, or take r dash because r have we already taken here. सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मतलब लाइक इसको हम यूज करेंगे, सेम वो उसी सेट के अंदर आएगा, क्योंकि ये जो आर डैश है वो रहेगा. हियर आर डैश इज बिटवीन 0 to n. ओके, सो अगर ये आर जो एम है वो एन से बड़ा भी हो जाता है, तो डिवीजन एल्गोरिथम से हम एन को एन क्यूब प्लस आर डैश दे सकते हैं. और इसको सेम अगर हम उस पर ऑपरेट करेंगे, सपोज ए रेस्ट पावर एन जो हमने प्रीवियस थ्योरम में प्रूव किया है, ए रेस्ट पावर एन इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर एन क्यूब प्लस आर डैश, दैट इज ए की पावर एन क्यूब डॉट ए रेस्ट पावर आर डैश, दैट इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट. तो ई और ई रेस्ट पावर क्यूब डॉट ए रेस्ट पावर आर डैश, दैट इज इक्वल टू ए की रेस्ट पावर आर डैश. तो जो आर डैश है वो हमने यहाँ पे लिया है 0 से n के बीच में. ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक इस n से नीचे का आ जाएगा कि 1 से n के बीच में आएगा, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है. सिमिलरली वी कैन चेक एसोसिएटिविटी. एसोसिएटिविटी अगर हम तीन एलिमेंट देते हैं, ए टू पी, ए रेस टू क्यू, ए रेस पावर पी क्यू आर, if we take three element, then that is equal to a raised to p plus q plus r, that is equal to a raised to p dot a raised to q dot a raised to power r. So associativity is also satisfied here. Now fourth property, third property, that is the first, second, third, fourth property. Now we have to check inverse element. Okay, for inverse element we know that a raised to n is identity element. So if we take any element a raised to p, okay, where
where p is between 1 to n. Okay, because here in this set, given that power is between 1 and n. So a raised to power p dot a raised to power q is equal to identity element that we have to take here. So here identity element is a raised to power n. So from this, if we pre-multiply a raised to power minus p, a raised to power p, a raised to power q, that is equal to a raised to power minus p dot a raised to power n, that is equal to a raised to power n minus p. Okay, and this is identity element. So a raised to power q is equal to a raised to power n minus p. Okay, n minus p. So this a raised to power q is inverse element of a raised to power p, or where a raised to power q is equal to a raised to power n minus p, and this n minus p is between 1 1 and n. Okay, because they're given that p is between 1 and n. So this n minus p will also between 1 and n. So hence proof, all four properties are satisfied in this set H, then this set is group. Now next theorem, if A is the element of order n of group G and P is the prime to n, then A raised to power P is also order of n. Okay. So given that order of A is n, that means A raised to power n is E. ठीक है, ये हमें गिवन है, यहाँ तक क्लियर है. Now now we have to check A raised to P. Okay, we have to prove that A raised to P also have order n. So and here given that P is prime to n means they are relatively prime. Relatively prime means मतलब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा. P and N are relatively prime. Relatively prime का फंडा क्या होता है कि अगर दो एलिमेंट मान लो P and Q are relatively prime, then the greatest common divisor is 1. For example, if we take 4 and 5, if we take two elements 4 and 5, then इन दोनों के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1. ठीक है, ये दोनों 1 के अलावा किसी से भी डिविजिबल नहीं है जो कॉमन फैक्टर हो. बट this 4 is not prime. 5 is prime, the mother. 4 is not prime, but they both are relatively prime. So the greatest common divisor is 1. So for that, we can write division algorithm P x plus qy is equal to 1. Okay. From this, we will take a is equal to a raised to power 1, that is equal to a raised to power given here, given that P and N are relatively prime. Relative prime. That means Px plus Nq is equal to 1. So यहाँ 1 की जगह हम देख सकते हैं Px plus Nq. So take it y, x y लेते हैं. So Px plus Ny, okay, that is equal to a raised to power n raised to power p dot a raised to power, sorry, here I will erase it. So I will write properly here. So here a raised to power px plus ny. Okay, so that is equal to a raised to power
p raised to power x dot a raised to power n raised to power y, and this a raised to power n is equal to identity element, that is equal to identity element. Okay, so that is a is equal to a raised to power p raised to power x. Now we will take power m in both sides. Okay, if we take power m both sides, a raised to power m, suppose order of a raised to power p is equal to m, अगर हम ये मानते हैं, okay, we have to prove that m is equal to n, because order of, we suppose order of p, order of a raised to power p is equal to n, and given that order of a is equal to n, then we have to prove that m is equal to n. So a raised to power m, take m power in both sides, a raised to power p x raised to power n. Okay, from this we can take a raised to power p raised to power n, okay, and whole power x, that is equal to a raised to power p is equal to a raised to power n. From this, we can say a raised to power p whole power m is equal to identity element. That is the definition of order of element. So from this we can say that is identity element. So e raised to power x, that is equal to e. So a raised to power n is identity element. Okay, so we can say, from this we can say this, from this equation 1 and this equation 2, we can say this n divides n. Okay, call it equation 3. Okay, or from this, from equation 1, from equation 1 we can take power m in both sides, that is equal to identity element, and power e raised to power n will be equal to identity element. So from this we can say a raised to power n raised to power whole n is equal to identity element. So from this we can say this m divides n. Take it equation 4. Now from equation 3 and 4 we can say n is equal to m. Okay, hence to ये तभी पॉसिबल है क्योंकि ये रिलेटिवली प्राइम है, तो p और n है रिलेटिवली प्राइम है, तभी ये पॉसिबल हो सका. So we can say order of a is equal to order of a raised to power p, where p is relatively prime to n. Okay, so hence proof. Next, given that group G is abelian group and two element A and B, given that these two element A and B belong to G, such that order of A is n and order of B is n, and given that m and n are relatively prime, then we have to prove that order of AB is equal to mn. Okay, so given that a raised to power n is identity element and b raised to power, sorry, a raised to power n is equal to identity element and b raised to power n is also equal to identity element, and take order of AB is equal to p. That means AB raised to power p is equal to identity element, where p is the least positive integer number. So from this, if we take AB raised to power m n, अगर हम AB की whole power mn लेते हैं, तो given that G is abelian group,
अच्छा, पहले एक अबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है, अगर हम दो एलिमेंट की होल पावर लेते हैं, ए बी रेस्ट पावर सपोज एन लेते हैं, तो डेट इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर एन बी रेस्ट पावर एन, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसको हम प्रूव कर सकते हैं। सपोज अगर ए बी रेस्ट पावर एन है, तो हम लिख सकते हैं तो ए बी सो ऑन ए बी। ओके, अब ये अबिलियन ग्रुप है, मतलब ए बी इक्वल टू बी ए। अबिलियन ग्रुप का मतलब ये होता है कि ग्रुप विद कम्यूटेटिविटी। ओके, कम्यूटेटिविटी मीन्स ए बी इक्वल टू बी ए। So from this we can write this BA is equal to AB. So AB, B, so on AB. Or this we can write A square B square. From this we can write A square B square AB, so on AB. तो इस तरह से हम अगर ऑपरेट करेंगे n टाइम्स, तो ये आ जाएगा A रेस्ट पावर n B रेस्ट पावर n। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी रेस्ट पावर एम एन इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर एम एन बी रेस्ट पावर एम एन। ओके, दैट इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर एम होल पावर एन एन डॉट बी रेस्ट पावर एन होल पावर एम। ओके, और दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट फ्रॉम दिस इक्वेशन वन, and from this equation 2 we can say that is identity element. So that means this AB raised to power n n is equal to identity element. That implies that implies uh, this p is a, where here we assume that order of AB is equal to p, because AB raised to power p is equal to identity element. So जो ए बी है वो ऑर्डर है, तो ये दिस पी डिवाइड्स एम एन। तो सेम प्रॉपर्टी जो हमने पिछली थ्योरम में यूज की है वही है कि यहाँ पे जो पी है वो लीस्ट पॉजिटिव नंबर है। ये जो पी है वो लीस्ट पॉजिटिव नंबर है, जिसके लिए वो आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाता है। तो इसके ऊपर कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन इससे छोटा कोई भी नहीं होगा। तो ये जो पी होगा वो इसको एम एन पे डिवाइड करेगा। कॉल इट दिस इक्वेशन 3। ओके, नाउ टेक ए बी रेस्ट पावर पी एन। ओके, that is equal to a raised to power p and b raised to power p n. Okay, that is equal to a raised to power, okay, that is equal to a raised to power n p n and b raised to power n whole power p, and that is identity element, equal to identity element. That means that is equal to a raised to power p n dot identity element, or a raised to power p n. So a b raised to power p n. Okay, a b raised to power p n is equal to p n a raised to power p n. Okay, यहाँ तक ठीक है? Okay, that is equal to a raised to power p n. So from this we can take a b. Okay, so from this we can say, take it equation 4, or from this equation we can take a b raised to power p n is equal to a b raised to power p whole power n. That is equal to a b raised to power p. From this we can take is equal to identity element, that is e raised to power n, or that is equal to identity element. Okay, so this pn, okay, this pn will divide p. Means this order p will divide this pn. Okay, यहाँ तक clear है? So from this we can take that is equal to identity element.
Okay, so from this equation, the equation 4, we can say this m divides Pn. Okay, because इस इक्वेशन से हम दे सकते हैं कि जो ए बी की पावर एन है, ए बी की पावर पी एन है, वो इक्वल आ गई है, दैट इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर पी एन, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। क्योंकि अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट इक्वल है, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, कॉल इट इक्वेशन 5, तो 4 और 5 से हम लिख सकते हैं कि ए रेस्ट पावर पी एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो ए की पावर एम आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है और ए की पावर पी एन भी आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है, बट दिस एम इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर नंबर, सो फ्रॉम दिस वी कैन से एम डिवाइड्स पी एन। समझ में आया ना? मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम ए की पावर पी एन लेते हैं, ओके, इनको दोनों को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, दोनों के ऊपर पावर दे सकते हैं, क्योंकि ये अबिलियन ग्रुप है जो मैंने सब ऊपर की तरफ प्रूव किया है। यहाँ जो मैंने प्रूव किया है उससे हम इसको दोनों पे डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से हमने लिया ए की पावर पी एन एंड बी की पावर एन रेस्ट पावर पी, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हो रहा है। ये आइडेंटिटी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर लिख दिया, उसको ए की पावर पी एन लिख दिया। अब इसको जो ए बी रेस्ट पावर पी एन था, इसको हम लिख सकते हैं ए बी रेस्ट पावर पी की होल पावर एन, and AB raised to power p is equal to identity element from this. Okay, because we assume that order of AB is equal to p. From this, we can write e raised to power n, and that is equal to identity element. From this equation 4 and this equation 5, we can write a raised to power pn is equal to identity element. अब जो हमने इनिशियल लिया है कि ए रेस्ट पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो एम है वो लीस्ट पॉजिटिव नंबर है, इसके ऊपर और भी नंबर हो सकते हैं कोई भी जो इस इक्वेशन सेटिस्फाई करें, लेकिन एम इज लीस्ट पॉजिटिव नंबर, तो दैट मीन्स दैट इज एम डिवाइड्स पी एन। तो सिमिलरली वी कैन टेक ए बी रेस्ट पावर पी एन, दैट इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर पी एम, p raised to power pm, and this is equal to identity element, that is equal to b raised to power pm, और यहाँ पे a b raised to power p whole power n, okay, that is equal to identity element e raised to power n is equal to b raised to power pm, that means b raised to power pm is equal to identity element. Okay, that means from this we can say n divides pm. Okay, now these two equations we can write, from these two equations we can write mn and mn divides p. Okay, I call it equation 6. Okay, from this equation 3 and 6 we can say p is equal to mn. ठीक है, क्लियर हुआ? इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। नाउ वी विल टेक फ्यू एग्जांपल्स। ओके, ये बेसिक थ्योरम्स थी, इनको आप रिवाइज कीजिएगा तो आपको बेटर क्लियरिटी आएगी। ओके, और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको लिंक पे दे दूंगा, तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। नाउ वी विल टेक फ्यू एग्जांपल्स। इफ वी टेक ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 5, ओके, दैट मीन्स a raised to power 5 is equal to identity element. Okay, now we have to prove order of b. We have to find order of b given that a raised to power b, a inverse is equal to b square, that is given. So from this, if we take a inverse is equal to b square, take square in both sides. Okay, so
A B A inverse whole square is equal to B raised B square power 2. That is equal to A B A inverse dot A B A inverse, that is equal to B raised to power 4. A inverse is equal to identity element. So we can write, from this we can write A B square A inverse is equal to B raised to power 4. Okay. Now put this value B square in this equation. So from this we can write A B A inverse is equal to B raised to power 4. यह हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम बी की ऐसी पावर लेंगे जिससे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। ओके, तभी हम उसका ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। तो उस ऑब्जेक्टिव से हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं कि हम बी की पावर हम दिए जा रहे हैं जिससे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो फ्रॉम दिस वी कैन राइट ए स्क्वायर बी ए रेस्ट पावर -2 that is equal to b raised to power 4. Now take square in both side. A square b a raised to power -2 का होल स्क्वायर, that is equal to b raised to power 4 whole square. From this we can write a square b a raised to power -2 dot a square b a raised to power -2, that is equal to b raised to power 8, that is equal to, from this a raised to power -2 and a square is equal to identity element, then b and multiply by b is b square. From this we can write a square b square, okay, and a raised to power -2 that is equal to b raised to power 8. Okay, and again we will put b square value from this equation. Okay, so that is equal to a square a b b raised to power -1 a raised to power -2 that is equal to b raised to power 8, or we can write a cube b a raised to power -3 that is equal to b raised to power 8. Now take again square in both sides. So a raised to power 3 b a raised to power -3 whole power 2 that is equal to b raised to power 8 whole power 2. Okay, that implies again ये पावर b पे चली जाएगी और b स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे। ठीक है, जैसे इसमें किया था हमने, ये जो जो भी स्क्वायर लेते हैं वो बीच में चली जाती पावर, तो यहाँ भी ये पावर बीच में बी स्क्वायर पे चली जाएगी और बी स्क्वायर की वैल्यू हम वापस यहाँ से रखेंगे इस इक्वेशन से। सो यहाँ से हमें मिलेगा a raised to power 4 b a raised to power -4 that is b raised to power 60. Again take square in both side, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, a raised to power 4 दोनों तरफ स्क्वायर ले लो अब, that is equal to, अभी अगेन पावर बीच में चली जाएगी, a raised to power 4 b raised to power 2 a raised to power -4 that is equal to b raised to power 32. Okay, and from this we can write, again put a square b square value from this equation, put a raised to power 4 a b a inverse a raised to power -4 that is equal to b raised to power 32. Okay, from this we can write a raised to power 5 b a raised to power -5 that is equal to b raised to power 32. And here we are given that order of a is equal to 5, means a raised to 5 is equal to identity element. That means a raised to power -5 is equal to, is also equal to identity element. So from this we can write this is as identity element and this is also identity element. That means e dot b dot e is equal to b raised to power 32. Okay, from this we can write b is equal to b raised to power 32.
take B inverse in both sides. B inverse, B inverse. That means that is equal to identity element, but that is equal to B raised to power 31. ओके, सो यहाँ हमें मिल गया कि B की हम 31 पावर लेते हैं तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हो जाता है. बट जरूरी नहीं है ये 31 उस ग्रुप इस एलिमेंट का ऑर्डर हो, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू ऑर्डर होता है मिनिमम लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए वो. ये जरूरी नहीं है मिनिमम वैल्यू, बट we know that if we take order of B is equal to n, where a raised to power n is equal to identity element. ओके, सो जो यहाँ पे m है वो लीस्ट पॉजिटिव नंबर है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है. सो दैट मीन्स दिस m दिस m will divide this 31. ओके, बट वी नो दैट 31 इज अ प्राइम नंबर, सो जो m है वो इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा. अगर वो एक ना हो तो वो डिवाइड नहीं कर पाएगा. और यहाँ दैट इज b. So from this we know that the 31 is a prime number, so m is equal to 31. So order of this element b is equal to 31. That is good example. Now I will take one more example and I will give it one homework. So take this equation, and now we have to prove that this is abelian group. This is true for a semi group. So here we semi group is given with this equation, and we have to prove that this is abelian group. For abelian, we have to first show that this is group, then with commutative property. So from this equation, we can easily say, from these equations we can say x square is equal to e. Okay, this square is equal to identity element. So from this we can say x is equal to x inverse. मतलब जो ये सेमी ग्रुप है इसमें हर एक एलिमेंट अपने ही एलिमेंट का इन्वर्स होता है. ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक्स एंड वाई नहीं है, कोई भी रैंडम एक्स एंड वाई कोई एलिमेंट है उस ग्रुप सेमी ग्रुप के, तो हम इसके एक्स वाई वाई भी ले सकते, जेड भी ले सकते, तब भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी. तो ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेमी ग्रुप इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ. So we will use this property, and now from this we will take, suppose x is x y whole square. Okay, from this, if we take two element x and y belong to this semi group S, then x dot y should also belong to this semi group S, because यहाँ पे सेमी ग्रुप गिवन है. सेमी ग्रुप गिवन है, दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी. तो क्लोजर प्रॉपर्टी से हम ये कह सकते हैं कि दिस एक्स वाई शुड बिलोंग्स टू सेम ग्रुप एस, सेम सेमी ग्रुप एस. ओके, सो अगर ये इस सेमी ग्रुप का एलिमेंट है तो इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करेगा. इस प्रॉपर्टी का मतलब इस प्रॉपर्टी से हमने आउटकम निकाला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई. ओके, मतलब हर एक एलिमेंट का स्क्वायर उसका आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगा. सो अगर ये भी उसकी सेमी ग्रुप का पार्ट है तो ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगा. सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट xy is equal to identity element, and take x inverse here and y inverse here. Similarly, take x inverse here, y inverse here. So from this we can write identity element, and this is yx and this is identity element, that is equal to x inverse y inverse. So from this we can write yx equal to x inverse and y inverse, and we know each element of this semi group is equal to also its inverse. So from this we can write x inverse is equal to x and y inverse is equal to y. So yx is equal to xy. ओके, तो यही तो प्रूव करना था हमें कि ये अबिलियन है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई.
आइडेंटिटी एलिमेंट सेटिस्फाई हो गया यहाँ पे, एंड इनवर्स भी सेटिस्फाई हो गया कि इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो चारों प्रॉपर्टी ग्रुप की सेटिस्फाई हो गए विद कम्यूटेटिविटी, तो ये अबिलियन ग्रुप होगा. नाउ अनदर एग्जांपल. ओके, this is simple. You can try. uh, okay, let me solve this also. So given that order of, we have to prove that order of A is equal to order of B inverse A B. Okay, so given that, suppose we take order of A is equal to n. Okay, that means A raised to power n is equal to, A raised to power n is equal to identity element. Now, we will take, suppose we will take order of B inverse A B is equal to n. If we take n, okay, that means B inverse A B raised to power n is equal to identity element. Okay, तो याद है, ठीक है. Okay, so we will, now we have take, first we have to take n divides m, then later we prove that m divides n, that means n is equal to m, that we have to solve. Okay, so a raised to power m is given this one, and uh, b inverse ab raised to power n is equal to identity element. From this we can write ये पावर या इस पे ए पे आ जाएगी, क्योंकि जैसे हमने पहले प्रूव किया है कि अगर हम इसको ऑपरेट करते हैं, सपोज बी रेस्ट टू माइनस बी इनवर्स ए बी एंड बी इनवर्स ए बी सो ऑन, अगर हम इस तरह से लेते हैं तो ये बी इनवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, और ए जो ऑपरेट होके ए स्क्वायर हो जाएगा. तो इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो पावर एम है वो बीच में चली जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं बी इनवर्स ए रेस्ट पावर एम b is equal to identity element. Okay, now pre-multiply this equation by b and post multiply by b inverse. Okay, here b and b inverse. So from this we can write a raised to power n is equal to b inverse is equal to identity element. That means we have assumed that a raised to power n is equal to identity element, and here we found that a raised to power m is also equal to identity element. That means this n divides n. ओके, सो ये हमने इसको मान लेंगे इक्वेशन 1. अब हमें प्रूव करना है दिस सेकंड. ठीक है, n डिवाइड्स n. फॉर दिस टेक दिस इक्वेशन a रेस्ट पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, और इसको थोड़ा स्पेस से आप लिख लो a रेस्ट पावर n, इसको हमने प्री मल्टीप्लाई किया b रेस्ट पावर -1 से, एंड पोस्ट मल्टीप्लाई किया b से, दैट इज इक्वल टू, इस आइडेंटिटी एलिमेंट को भी ऐसे लिख सकते हैं बी रेस्ट पावर -1 ई बी रेस्ट पावर 1, मतलब बी. सो इसको हम लिख सकते हैं बी रेस्ट पावर -1 ए बी रेस्ट पावर होल एन, दैट इज इक्वल टू बी इनवर्स, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट. तो फ्रॉम दिस वी कैन से, बिकॉज हमने यहाँ अज्यूम किया है कि ये एम लीस्ट पॉजिटिव नंबर है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है. यहाँ से हमें n के लिए भी सेम इक्वेशन मिल रही है. So that means that m divides n. Take it equation 2, and from equation 1 and 2, from 1 and 2, we can say n is equal to m. That means order of A is equal to order of B inverse A B. Hence proof. So thank you. That's it for this lecture. In next lecture.